Before we move on to our next session, I would like to thank our sponsors once again, the Hatay Group and TT Consultants. You've been an integral part of today's event and it would not have been possible without you. A round of applause for them, please. Sports is incomplete without media and media is incomplete without sports. We now move on to our next session, Sports, the Pen, the Lens. Our panelists for the same are Mr. VIJAY Lokapally. He is a Delhi-based Indian sports journalist and author. He started his career when he joined the Patriot newspaper in 1981 and later moved to the Hindu group, writing for its publication The Hindu and Sports Star from 1986. He has written 5 books related to cricket in India: The Virendra Sehwag Story, Driven, World Cup Warriors, the Boys in Blue, Speed Merchants, The Story of Indian Pace Bowling, and The Hitmen, the Rohit Sharma Story. May we have a round of applause for Sir, and I request him to please come up on the dais. List covering sports and social issues. He's also associated with Pick Story, a new social media platform designed to fight misinformation, hate speech abuse, and other forms of toxicity. He runs a YouTube channel, Sports Gown, dedicated to the sports persons braving odds. He has also worked with Hindustan Times, Chandigarh, for over 15 years. He has authored the book Akhada, authorized biography of Mahavir Fogart, on whose life the Bollywood movie DUGGAL was made. I request him to please join us on stage. Can we have an applause for him, please? Our third panelist is Mr. KAMAL Kishore. He's a photojournalism leader with 36 years of experience. He has a diverse experience from covering a wide range of areas such as sports, war and terrorism, natural disasters, politics and business, and has a global exposure of over 30 countries. He has won numerous awards like the UNICEF Award for a Girl Child Picture, the Matra Shri Media Puraskar in 2016, the National Award for Excellence in Photojournalism from the Press Council of India in 2014, etc. May we have a round of applause for Sir, and I request him to please join us on stage. His pictures are being displayed on this screen here. They will be in conversation with Dr. H.K. Bali. Dr. Bali has more than 30 years of experience in cardiology and has introduced primary angioplasty for management of heart attacks in this region. He has performed more than 15,000 coronary interventions as the primary operator. He was also additional professor in PGI Chandigarh. He has been awarded the Kataria Memorial Gold Medal in 1985, the highest academic award of PGI Chandigarh. In 1990, he was awarded the D.P. Basu Award by Cardiological Society of India for being the best young investigator of the year. May we have a round of applause for him, and I request him to please come up on the dais. At the outset, I would like to congratulate Mr. Vivek Khatri, Chetty, I call him Chetty, Hardeep Chandpuri ji, Mr. CJ, and others, member of Playwrite, for organizing this wonderful, wonderful program. I don't think I have been kept engaged in a whole day program so intensely as in this particular program, and seeing some of the remarkable individuals in this function. Ashok Kumar ji is here. We've grown up listening to his stories, and some of the top journalists are here. So I was wondering, how are they going to introduce me? And when I listened to Hardeep Singh ji, he said he's a dropout, he's a failure, sports failure. So I was wondering, maybe I'm a sports dropout. Because you heard about so many tech greats being
dropouts from their college, universities, and going on well towards their field of sports, a field of their choice. And I, to begin with, was a sports person, and there's probably no game other than baseball and handball and volleyball, which I did not try my hand at, but then dropped out of each one of them. And incidentally, I tried to get into one organization, thought that cricket is a very good organization, I should be here. But the one organization which I got into and became vice president was volleyball, of which I have never played in. So that happens in life. But anyway, coming to the current discussion today, Vijay ji, we heard about, I'll start with Mr. VIJAY ji, LOKAPALLY ji, that we heard a lot about industry, we heard a lot about, Rajpal Singh ji was talking about passion. But I believe that sports a person gets into, what stories he's taught. When we listen to cricket, we talk about commentators, we hear about great sports journalists who build poetic stories about that game. And when a child grows up listening to those stories, for example, Jasdev Singh ji, describing his hockey skills, how the ball is going and dribbling, that stays in a child's mind. The passion comes from how the media, the journalists, writers build up a game and build up a passion in a child. Rest, industry and everything comes secondary. So passion is what drives the thing. So I would like to ask you that you have been covering sports for almost 30 years now. 40 years. What do you feel? Where are we going? Media, is the passion same as was in 30 years ago, 20 years ago, in writing, in presentation, in commenting, or in bringing the sports to the house of people? Is the passion of media same, of writers same? Hello everyone. I'll first share a little story about how I became a journalist. I didn't have any passion. It was because of my mother. She gave me a ticket to a test match, first time. And when I came back in the evening, she said, tell me what happened. So I reeled off all the details. And then she said, how do you remember all this? So that was my passion. And then she said, why don't you write? So I would sit at night and write something for her. And after that, I followed my approach to writing has always been as if I am writing a letter to my mother. It had to be written simply, and obviously I had to watch carefully and put everything where even a 6-year-old would understand what I'm trying to write next day. So I've continued the same policy for so many years. And then of course I built up this passion. And I and Rajaram, we come back from the era when we used to carry typewriters. I have been to the West Indies where everybody goes to have fun. I go to write with a typewriter. So times have changed. Without passion, nothing can be achieved. All these young people today who have come, I was just wondering, I have fallen in love with all these youngsters who spoke, because when I would have guests at home, I would go into hiding. I couldn't speak. And here they are sitting at such a stage and sharing their experiences of life and telling us what to do. Honestly, I've taken all their numbers and I'll be keeping in touch with them. So sport, you can, whether you're playing or whether you're writing or you're commentating, the base has to be passion, and you have to love sportsmen. I have always loved them, I respect them. And Ashok ji is here. I mean, to me it's a great honor that I know him and he knows me. I was listening to the commentary when he was scoring that goal against Pakistan, and I never dreamt I would ever meet him. And he's such a humble person. So these are the things, learnings I have got from the profession. And like you say, media has changed. It has changed amazingly. There are very young, good writers who are better than what I was at their age. Television has put print under tremendous pressure. Social media has put us all under tremendous pressure. We have to be far more, like I'll tell you, if I had written a Ranji Trophy match in my life, you will have to believe me, because there was nothing documented or on television. So जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, वो गलत भी हो सकता था,
But today it can't be. A young reporter cannot afford to make the mistakes which I would have made. And I've made many, and I've learnt. So people like SAURABH, you look at him, he had a very good job in HD. He gave up for whatever reasons, and he used to break stories and make life miserable next day for all reporters. So they would dread कि ये कब जाएगा, ये छुट्टी पे होगा, vacation पे होगा. So today medium of journalism has changed. You have to be very alert. You have to be very, very responsible. You cannot afford to make mistakes. I could. I mean, people of my generation could. So I have lots of time for people like SAURABH who have to work every minute, which I don't have to. I never had to. I could write my report even at 10 in the night. So that's how it has changed. It's far more challenging. But ultimately, the onus will be on the readers. If you don't support us, we will die. Vijayji, I am not going to let you there. I am going to ask you that now we're living in a time where there's a lot of divisiveness. And journalism has, I would say, under severe pressure across the board. Not only sports journalists, rest of the journalism also. We have, I would say that in sports also, there are a lot of pressures from the corporates, from business houses, from managers of sportsmen and women. So there are a lot of pressures on whom to promote, whom not to promote, and because the number of posts in each game are so limited, and we have so much huge talent in any sports, we could probably field 3 cricket teams and they could compete at the international level. So how do you address that pressures of different houses, and maybe including the agency or the organization for which you are working also? So there are so many pressures which were probably not there when Prabodhji was writing, but now there are pressures, especially with leagues coming up and sponsors coming up, not only of the organizations, but of individual sports person also. Well, I can speak for myself. I worked for a newspaper called The Hindu, which backed me all the way. They never told me what not to write, and they stood by me. Unfortunately, Rajaraman, you know, you have worked there as a sub-editor. You could not, once you have the backing of your editor, you fear nobody. So today, the pressure is from the editor himself. If you give him a story which goes against the federation, the ministry, or sponsor, they will not carry it, because the support will not be forthcoming from these 3 agencies. And it is very important. I mean, after all, in today's commercial world, you need sponsor support on your sports page also. Sometimes you do compromise, but I was lucky, extremely fortunate that my generation of reporters, we never had to undergo all these challenges of accommodating a request. I have had personally differences with many cricketers where they would say ki ठीक नहीं किया, but they would come back 2 days later because they would realize that I was doing my job. I was not there just to praise them. So I had to criticize them also. All big cricketers have done that in my life, and they are still my friends. So it will come, it depends on you, yes, but ultimately it boils down to what your Malik does. I know reporters in other papers, they want to write stories, but unka boss chhapta nahi hai. So you can't blame the reporter. It is for the organization. If they back you, you will have many, many brilliant and enterprising young journalists coming and doing much better work than what I did. Saurabh ji, you've been into media for such a long period of time. When we talk about sports person having their individual media managers and managing their everything, not only the media rights, but everything else, you think it's good for the sports? It probably started with McCormack making Wimbledon a commercial entity and selling every small thing, including the ball being commercialized and the scoreboard being commercialized. Now it has become so intense that even our players each has an individual media manager. So you think that's a good sign for the sports going forward? Hello. So actually, like whenever we talk about sports, या किसी भी अगर हम चीज़ की बात करते हैं तो हम एक्सीलेंस की बात करते हैं, और एक्सीलेंस सिर्फ
इस टर्म में नहीं होता, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। एक्सीलेंस होता है कि उसके साथ जुड़ी जुड़ी हुई लाइफ की जो जो चीज़ें हैं वो भी हमें मिले। अगर कोई अगर ओलंपिक मेडल जीतना चाहता है तो तो उसको सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को एक दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है, उसके साथ जो और चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि लाइफ स्टाइल कैसा उसका बदलेगा, रिकॉग्निशन कैसे होगी। सिमिलरली कोई अगर आईएएस में जाना चाहता है तो इट्स नॉट ओनली थिंग इज कि आपने एक सोसाइटी को सर्व करना है, उसके साथ और जो इंसेंटिव्स जुड़े हुए हैं, जो पावर जुड़ी हुई है, वो भी आदमी इंजॉय करना चाहता है। तो सिमिलरली अगर हम मीडिया मैनेजर की बात करते हैं तो ये इंडियन स्पोर्ट्स में लार्जली स्टार्ट हुआ विद क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हर कोई देखना चाहता है, हर कोई अगर एज अ जर्नलिस्ट उसे कवर करना चाहता है, और हर कोई ये चाहता है कि वो क्रिकेटर्स के पास पहुंचे, कॉरपोरेट्स जो हैं वो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दूसरी गेम्स में ये चीज़ पहले नहीं थी, बट 2010 कॉमनवेल्थ के बाद ये चीज़ें आनी शुरू हुई। और अगर आप लार्जली बाकी गेम्स के भी करेंगे तो परसेंटेज अभी भी बहुत कम है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में हम लोगों ने कोड क्रैक किया कि पहले जब इंडियन टीम जाती थी, सर के टाइम में, अशोक सर के टाइम में अगर कैंप लगते होंगे तो शायद साल में 2 महीने 3 महीने, हॉकी को थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती थी, हाँ 1.5 महीना, और अब जो है साल में 10 महीने कैंप लगे। तो जब वो कोड क्रैक किया, मेडल्स आए, तो हर तरीके से जो अटेंशन स्पैन था मीडिया का भी उसमें मिला, क्योंकि पहले क्रिकेट कवर होती थी, उसके बाद विंबलडन आ गया, या इंडिया में आप यूरोपियन फुटबॉल को कवर कर रहे हो, मोटर स्पोर्ट्स को कर रहे हो, तो इंडियन स्पोर्ट्स को भी जगह मिलनी शुरू हुई। उतनी ज़्यादा नहीं मिलनी शुरू हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हुई कि आपको बॉक्सर्स का पता लगने लग गया कि अगर विजेंदर है, अमित पंगाल है, मतलब काफ़ी हमें गेम के जो फर्स्ट हमारा टॉप प्लेयर है उसके बाद सेकंड थर्ड तक का भी हमें जाने लगा। तो सिमिलरली जब ग्रो हुई गेम, मीडिया के अंदर भी कवरेज आई, तो कॉरपोरेट का भी इंटरेस्ट बढ़ा। मीडिया तो उनको मैनेज करना स्टार्ट किया कि भी किसी तरह उनको मीडिया मैनेज करेंगे, कोई एक मैनेजर रख दिया जाएगा, तो एक तो उनका स्टेटस बढ़ गया प्लेयर का, और जो कंपनी उनको कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, तो वो एक बैरियर का भी काम किया और एक ब्रिज का भी विद द मीडिया, कि कहाँ पे अगर मीडिया को अप्रोच करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ को कवर की जा सकती है, या कहाँ पे कौन सा प्लेयर जा रहा है, तो उसमें प्लेयर को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ। और ये फिर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कैसे मैनेज हो रही है, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की बात करें तो बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जिनके पास प्लेयर की एक्सेसिबिलिटी है। तो विजय सर उनमें से एक है कि जिनके पास एक्सेसिबिलिटी भी है, रिगार्ड्स भी हैं, लेकिन जो आज का सिस्टम है तो प्लेयर्स हार्डली जर्नलिस्ट के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बाकी गेम्स में है। तो उसकी वजह से कि गेम कम भी कवर हो रही है, एक्सेसिबिलिटी है, तो जर्नलिस्ट कोशिश करता है कि अगर वो कहीं एक्स्ट्रा कोई चीज़ कवर कर पाए। तो मीडिया मैनेजर आना कोई गलत बात नहीं है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो इस चीज़ में मैटर करता है। तो सौरभ जी, आपने रूरल एरिया में भी काफ़ी देखा है, और इंडिया प्रीडोमिनेटली स्टिल 60% इज रूरल, और काफ़ी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, नॉट ओनली कबड्डी एंड अदर गेम्स, इवन इन क्रिकेट, फास्ट बॉलर्स एंड अदर थिंग। आपको क्या लगता है कि रूरल में हाउ कैन वी रीच आउट टू दोज स्पोर्ट्स पर्सन कि उनको भी उतना ही एक्सपोजर मिले जितना कि अर्बन एरिया से? बिकॉज क्रिकेट एट वन टाइम was Bombay based, Mumbai based, then it became Mumbai, Bangalore, Delhi based. Now it is pan Indian game, even remote corner से भी आ रहे हैं। तो बाकी गेमों को भी लेके रूरल एरिया को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आपको सर, अगर रूरल स्पोर्ट्स की बात की जाए, रेसलिंग या कबड्डी, तो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में या ब्रिटिश ईरा में इट वाज कि रियासत या किंग पैटर्नेज पे गेम्स चलती थी, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग थी, बट उन गेम में पैसा नहीं था। तो राजा के अपने अखाड़े हैं, अपनी टीम है, तो उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्ट हुआ। अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले अगर 10-15 साल की भी आप फिगर लें तो कम से कम
गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपीस का कैश अवार्ड दिया होगा प्लेयर्स को, और अगर आप उसकी फर्दर कैलकुलेशन करें तो 90% जो प्लेयर्स हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये जो कैश इंसेंटिव है वो एक तरीके से रूरल इकोनॉमी को भी उसको भी पंप इन कर रहा है, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा आ रहा है और कोई गरीब घर से है, अगर उसने अपना घर बनाया तो वहाँ पे गांव में लेबर्स को भी उस घर में काम करने का मौका मिला। थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो उसने गाड़ी खरीद ली, थोड़ा सा और पैसा आया तो उसने ड्राइवर भी रखा। तो ड्राइवर अगर उसने शहर में शिफ्ट नहीं किया है, गांव में रहा, तो गांव में किसी एक जने को ड्राइवर की नौकरी भी मिली। तो रूरल एरिया का एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मीडिया भी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि जब हम स्टोरीज़ की बात करते हैं तो किसी की अगर कोई ऑड है, कोई मुश्किल है उस चीज़ को जीतने में या कोई हासिल करने में, तो वो भी एक जर्नलिस्ट को एक मोटिवेट करता है कि वो उसको अच्छे तरीके से लिखे, उस स्टोरी में वो जस्टिस करे, क्योंकि वो उस प्लेयर का ड्यू है। और अगर कोई प्लेयर रूरल बैकग्राउंड से आता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है अगर वो अर्बन सेटअप से है। अगर वो रूरल एरिया से जो प्लेयर आ रहा है और अगर वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है तो उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है, और अगर वो दलित है तो उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास, अगर दलित की बात करें तो लैंड होल्डिंग्स नहीं है। अगर लैंड होल्डिंग नहीं है तो वो घर में लाइफ स्टॉक नहीं रख सकते, क्योंकि चारा भी खरीद के लाना पड़ेगा। अगर किसी घर में लाइफ स्टॉक है तो उसको दूध दही घर से मिल रहा है, तो एटलीस्ट वो जो स्पोर्ट्स, जहाँ इंडोरेंस स्पोर्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है, तो वो तकलीफ बढ़ जाती है। तो जो जर्नलिस्ट, क्योंकि लार्जली जब हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो यही होता है कि किसने मैच जीता, किसने मैच कितने अच्छे तरीके से खेला, और किसने उस पर्टिकुलर गेम में कैसे एज एन आर्टिस्ट, अगर हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, वो खेला। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक ऐसी चीज़ है कि सोसाइटी में जितने सोशल इश्यूज हैं वो भी लार्जली जो हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए एड्रेस किए जा सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे वो दलित सप्रेशन की बात हो, चाहे वो सोशल चेंज, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात हो। तो उसमें भी मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आज जहाँ जहाँ पे रूरल एरियाज़ में पॉकेट्स में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो लोगों को पता है कि अगर भिवानी के गांव से फुटबॉल की अच्छी टीम निकल रही है, अलगपुरा की, तो पता है शाहबाद एक हॉकी से हब बना, संसारपुर की है या मीठापुर है। तो इसमें मीडिया का जो है काफ़ी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। कमल जी, आपकी बड़ी आइकॉनिक फोटोज देखी, और अभी हरदेव सिंह जी मैंने कहा कि मोहम्मद अली और ब्रूस ली की फ़ोटो थी। मुझे याद नहीं कि जब हम कर रहे थे कि रूम में किसी ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन की फ़ोटो ना रहती हो, और कई आइकॉनिक फ़ोटो हुए, चाहे मोहम्मद अली सोनी लिस्टन नीचे पड़े हुए हैं वो फ़ोटो है, या कपिल का कप, ये आइकॉनिक फ़ोटो हमारे साथ स्टे करें। तो आपने ये सब कुछ देखा है और इसका इम्पैक्ट देखा है कि जो भी स्टार्स हैं, विराट कोहली हुए, अशोक जी हुए, कोई भी स्टार्स हुए, वो जो बच्चे ग्रो करते हैं वो उन फोटो को देख के ग्रो करते हैं। बड़े कम लोग हैं जो बुक्स पढ़ के ग्रो करते हैं। तो एक तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और दूसरा आज के दिन में जब डिजिटल मीडिया है सभी जगह, तो इन फोटोज का क्या इम्पैक्ट है? सी फोटोग्राफी जब से हम, कैन यू हियर मी? ओके, पहले वी यूज्ड टू शूट ऑन फिल्म्स, फिर उसके बाद में डिजिटलाइजेशन हुआ, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप हुआ कि हम फिल्म को फिल्म पे खींचते थे। देन वी यूज्ड टू स्कैन ऑन स्कैनर्स, अब ये डिजिटल आ गया है, एंड उसमें स्कैन करने के बाद में वी यूज्ड टू टेलीफोन लाइन चाहिए होती थी, उसके थ्रू वी यूज्ड टू सेंड पिक्चर्स। अब ये डिजिटल एरा आ गया, इंटरनेट इज़ वेरी हैंडी, तो एज ए ट्रांसमिशन एंड ऑल उसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और जब फिल्म पे खींचते थे तब तो ये होता था कि न्यूज़पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती थी कि कुछ एक्शन मिल जाए, 4-5 मैच के क्रीमी एक्शन मिल जाए, उनमें से 1 या 2 फोटो वो लोग छाप देते थे। अब IPL आ गया है, इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है, एंड व्हाट पीपल सी ऑन TV
live telecast में you I think see cream of 20 cameras or so, and our editor they expect us to cover everything. वहाँ पे आप 20 कैमरों का निचोड़ देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं. यहाँ पे एक आदमी है, he cannot see, he cannot cover everything. विराट कोहली की वाइफ स्टेडियम में आई है, हम इस एंड में बैठे हैं, वो उस एंड में बैठी है, and then there are some politicians and we are restricted to one particular place only. We can't be, we can't give you cream of 20 cameras. तो बहुत फ़र्क तो आया है. एंड ये सब चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प भी करा है और फ़र्क भी आया है. एंड आइकॉनिक फ़ोटोज़ आर आइकॉनिक फ़ोटोज़, उसमें तो देयर इज़ नो डाउट. इट इज़ ओनली कि भाई हाउ लकी यू आर. कई बार होता है आपके सामने कोई प्लेयर आ गया, कई बार होगा आपके कैमरे ने फोकस नहीं करा. टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से फ़र्क तो बहुत आया है. तो आइकॉनिक फ़ोटोज़ तो आइकॉनिक फ़ोटोज़ ही हैं. थैंक यू. विजय जी, आपने लिखा भी बहुत और किताबें भी काफ़ी लिखी. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादा किताबें आपने क्रिकेटर्स पे लिखी, तो यहाँ अशोक जी हैं, इन पे किताब होनी चाहिए. और अगर हम बात करते हैं कि क्रिकेट को प्रमोशन मिली है, तो वो इसलिए है कि बाकी स्पोर्ट्स को हमने इतना ड्यू नहीं दिया. चाहे ध्यानचंद जी हों या अभिनव बिंद्रा जी हों. अभिनव बिंद्रा जी ने अपनी किताब लिखी है, बट किसी और ने अभिनव बिंद्रा जी पे अभी किताब नहीं लिखी, या नीरज चोपड़ा पे किताब नहीं लिखी, पीटी उषा पे किताब नहीं लिखी. सो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं पे हमें बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए. जो हमारी स्पोर्ट्स है जहाँ पे हम इंटरनेशनल एट सम टाइम फोर्स थे. तो आपको कभी लगता है कि इस तरफ, और आपका तो इंटरेस्ट भी है हॉकी में, बिल्कुल This है. is a some suggestion that the next book should be on Ashok ji, if I may say so. Ashok ji first will have to get ready to do it. He will see. It is not कि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, कि दिक्कत यह है, मैंने बहुत सारा म्यूज़िक पे भी लिखा है, सिनेमा पे भी मैंने बहुत लिखा है, लेकिन आप मुझे सिर्फ क्रिकेट के लिए जानते हो. नहीं, मैं अभी म्यूजिक पे भी जानूंगा आपको. बिल्कुल जानूंगा. हाँ, मैंने, मेरे फिल्म क्रिटिक हैं जिया, उनके साथ एक फिल्म का भी बुक किया. ये फिल्म म्यूजिक का और क्रिकेट का क्या रिलेशन है? राजू बार्टन भी लिखते थे, क्रिकेट पे भी लिखते थे, मूवीज पे भी लिखते थे. मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ, क्योंकि वो फिल्म पे बहुत अच्छे लिखते थे. और एक मेरे लिए एक आइकॉनिक फ़ोटो है राजू भरतन का, जो टाइम्स ऑफ इंडिया इलस्ट्रेटेड वीकली में थे. वो एक इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके लेफ्ट में लता दीदी एंड राइट में आशा भोसले, वो बीच में. सो आई वुड लव टू हैव सच अ पिक्चर वेयर आई एम डूइंग एन इंटरव्यू ऑफ गावस्कर ऑन माई लेफ्ट एंड सचिन तेंदुलकर ऑन माई राइट, और मैं बीच में. सो होता यह है कि क्रिकेट पब्लिशर रेडी होना चाहिए. जो भी मैंने लिखी है पब्लिशर ने बोला, इसलिए मैंने लिखा. अगर आप मेरे से पूछेंगे, आई वुड लव टू राइट ऑन अ बुक ऑन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट. दीज आर द 3 स्पोर्ट विच आई कवर्ड वेरी पैशनेटली. आप सिर्फ मुझे क्रिकेट के लिए ही जान रहे हैं. अशोक जी के घर जाके मैंने एक स्टोरी की, जो हमने ध्यानचंद जी की किताब है गोल, उसको हमने रीप्रिंट किया, और जिसमें अशोक जी का एक आर्टिकल है. वो इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वी हैव सीन. The thing is, you need support from readers. अगर आप देखिए बाहर बुक शॉप है, if you go and ask सिमर जी, so he'll give you the best response on books. टेनिस पे लिखी गई, हॉकी पे भी लिखी गई हैं, फुटबॉल पे भी लिखी गई है. लोकापाल्ली has written as one of the finest books ever in Indian sporting history, जो उनका बुक है. पर लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो पब्लिशर भी नहीं छापेगा, बिकॉज उसको कम से कम 5,000 कॉपी तो भी निकालनी पड़ेंगी टू मीट द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट इज़ वन रीज़न वी वुड लव टू हैव. देर आर स्पोर्ट्स राइटर्स हु आर विलिंग टू डू बुक्स, नॉन क्रिकेट बुक्स, एंड बिलीव मी, आई हैव in my collection every non-cricket book written. That is because I am a sports journalist. I made it a point to buy, because as an author I can tell you, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं किताब लिखने के लिए. आप उठाते हैं, रख देते हैं, बट उसके पीछे आपको एफर्ट नहीं दिखता है कि 2 साल का एफर्ट है, कोशिश की है. नो बुक इज़ बैड. इट कुड बी लेस बेटर दैन द नेक्स्ट बुक, बट बुक्स आर रिटन विद लॉट ऑफ पैशन.
एंड हम लोग तभी लिख पाएंगे जब आप लोग खरीदेंगे किताबें. Not just, sport is not only on television. Sport you have to feel, read, and when you spend time with sportsmen, when you spend time with journalists in the evening, हम लोग मैच कवर करते हैं, सब लोग घर जा चुके होते हैं, हम लोग 9 बजे लिख ही रहे होते हैं स्टेडियम में, खाली स्टेडियम, अंधेरा, और फिर घर जाते हैं, होटल में जाते हैं, कई बार खाना भी नहीं मिलता है. सो दिस इज़, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्टोरी एज अदर्स ऑल्सो. वी हैव टू स्ट्रगल. पर जब तक सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्रिकेट की ही किताबें मिलेंगी. सौरभ जी, आपने यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू किए स्पोर्ट्स पर्सन्स के अदर देन क्रिकेट, या आपको उनको प्रमोट करने का कोई मौका मिला? सर मैं थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड क्रिकेट पे कम बात कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट तो सभी जानते हैं. सो सर आई हैव प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल एंड मैं इंजीनियरिंग कर रहा था YMCA फरीदाबाद से. तो क्या हमें जनरली जर्नलिस्ट के पास जाना पड़ता था कि हमारे ये परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की, या अगर आप उसको पब्लिश कर दें. तो फिर ग्रेजुअली एक दिन ये सोचा कि जो मैं खुद ही जर्नलिस्ट ही बन जाता हूँ कि बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो मैं खुद ही लिख लूँगा. और उसके यही बाद रीजन है मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर के पास जाना ना पड़े. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आई कि जो क्रिकेट है इंडिया में, तो हम अगर किसी चीज़ में अगर क्रिटिसाइज नहीं करते हैं तो कई बार हम ये कह देते हैं कि क्रिकेट को शायद कुछ बहुत ज़्यादा मिल रहा है. तो क्रिकेट इतना बड़ा है कि एज अ जर्नलिस्ट अगर आपको वो चीज़ कवर करनी है तो वो शायद एक ही स्पोर्ट कवर हो पाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट है, इंटरनेशनल इतने मैचेस हैं. मैं सर 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा. आई थिंक सुबह से कुछ फीलिंग ऐसी है कि क्रिकेट में पैसा बहुत है, राइट? मैं उसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालना चाहूँगा. क्रिकेट में पैसा हुआ है, क्रिकेट में शुरू से पैसा नहीं था. सर मैं अगर इंडियन क्रिकेट टीम जब 1983 वर्ल्ड कप में जीती तो उस समय उनको जो डेली अलाउंस था वो शायद हॉकी के कंपैरिजन में ही था. 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते, थोड़ा ज्यादा होगा सर, उनको भी 120 रुपए ही मिलते थे अगर आप वो okay. So, उसके बाद 83 में वर्ल्ड कप हम जीते, 87 में वर्ल्ड कप इंडिया में लेके आए जो रिलायंस वर्ल्ड कप था. उसके बाद कमर्शियलाइजेशन शुरू हुई. सो पैसा क्रिकेट में आया है जिसमें परफॉर्मेंस टीम की भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आइकॉनिक प्लेयर्स लाइक कपिल देव 1983 में आए तो जिसने एक जनरेशन को इंस्पायर किया. सो मुझे लगता है कि अगर हॉकी या कोई और गेम भी, फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन एथलेटिक्स बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स वी आर. मैं सर आपको थोड़ा सा एक सो मनी आती है परफॉर्मेंस से और आइकॉनिक प्लेयर्स होने के कारण, और लोग उनको देखते हैं एज हीरोज. वो बाकी डेफिनेटली सर, जब भी हम किसी गेम की बात करते हैं तो उसमें एक्सीलेंस और हीरो चाहिए, क्योंकि आप उसमें फॉलो करते हो. अगर आप पैसे की बात करें सर, पंजाब स्टाइल कबड्डी है, रूरल कबड्डी है, पंजाब में खेली जाती है, पंजाबी खेलते हैं. वर्ल्ड ओवर भी जहाँ पे पंजाबी सेटलमेंट है वहाँ खेलते हैं. उसका जो बजट है सर, जो प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा, वो एक सीजन में, एक साल में अबाउट 150 करोड़ है. एक ठीक पंजाब स्टाइल कबड्डी का प्लेयर साल में 50-60 लाख रुपए कमाता है, जो रणजी ट्रॉफी का प्लेयर नहीं कमाता है. तो सिर्फ बात ये नहीं है कि सर कि सिर्फ एक पैसा ही होना है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है. वो गेम कहाँ खेली जा रही है, उसके पीछे क्या स्ट्रक्चर है. अगर आप रेसलिंग की बात करें तो जो दंगल है, जो मिट्टी में रेसलिंग होती है, तो उसमें अगर कोई अच्छा रेसलर है तो वो एक सीज़न में 50-60 लाख रुपए भी कमा लेता है, और काफ़ी बड़ी अमाउंट है. तो जो दूसरी गेम्स का सर सपोर्ट है उसमें लार्जली कॉरपोरेट इन्वॉल्व नहीं है. उसमें गवर्नमेंट के कैश अवार्ड्स हैं. ये अगर हम रेसलिंग की बात करें तो लार्जली जो है वो हरियाणा से प्लेयर्स आ रहे हैं, या एग्रेरियन बेल्ट पे अब से प्लेयर्स आ रहे हैं. तो हर स्टेट ने कैश अवार्ड दिया. अगर एक साइकिल की बात करें, ओलंपिक टू ओलंपिक 4 साल, प्लेयर का ओलंपिक में मेडल नहीं आया, एशियन गेम्स में मेडल आ गया, कॉमनवेल्थ में आ गया, तो उसको 4 साल के स्पैन में जो अच्छा प्लेयर है
उसको 2.5 करोड़ रुपया तक मिल जाता है। अगर दोनों में गोल्ड है, एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ में, तो दैट इज 4.5 करोड़ रुपीज इफ ही इज फ्रॉम हरियाणा। अभी मैं सेंटर के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो उस तरीके से, तो कॉर्पोरेट अभी नहीं आए हैं सर, और उसमें कई और रीजन भी हैं। अगर हॉकी की बात करी जाए, हॉकी एक स्पेक्टेटर फ्रेंडली गेम नहीं है, क्योंकि छोटी बॉल है। अगर सेम चीज में अगर मैं एज अ जर्नलिस्ट एक्सपर्ट बैठे हैं, तो अगर कहीं फाउल हुआ है तो शायद वो तीनों अलग अलग बताएंगे कि ये किस वजह से फाउल है। टेक्निकल गेम है। वहां पे फुटबॉल को वो एक एज है कि इजी गेम है, स्पेक्टेटर फ्रेंडली है, आप शुरू से उस गेम को फॉलो करते हो। अब अभिनव बिंद्रा की जो स्पोर्ट है सर, दैट इज नॉट दैट मच स्पेक्टेटर फ्रेंडली। वहां पे एफर्ट बनाया गया कि उसको स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाया जाए, कि अगर 10 मीटर्स का मैच हो रहा है तो बड़ी स्क्रीन्स लगा दी जाएं कि कहाँ पे जो है उसका पैलेट आ रहा है, लोगों में क्यूरोसिटी आए कि ये 10.9 है, ये 10.8 है, अब ये एक मिस हो गया, एक 9 हो गया। तो मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं। और एंड ऑफ द डे जो है, अगर मीडिया की बात करी जाए तो सर, जो न्यूज़पेपर की अगर हम सिर्फ बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है वो 14 to 18 रुपीस पड़ती है। हम लोग उसमें 4 रुपए देते हैं। ये अकेली एक ऐसा इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर उसका पैसा नहीं दे रहा। हमने शूज़ खरीदना है, शूज़ मैंने पहनना है, उसकी जितनी कॉस्ट है, जो जिसने उसको बनाया उसमें प्रॉफिट जोड़ के मैंने वो शू खरीदा। लेकिन जब मीडिया की बात आई तो 70% कौन गैप दे रहा है कि मैं जो पेपर 20 रुपए का आता है मैं 6 रुपए का खरीद रहा हूं। 14 रुपए कौन दे रहा है? एडवर्टाइजर दे रहा है। तो जब 70% पैसा एडवर्टाइजर दे रहा है तो उसका भी जो है कंट्रीब्यूशन कहीं ना, और इन्फ्लुएंस रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉर्पोरेट चाहेगा कि जो है अनएथिकल चीज की तरफ भी जाए, लेकिन अगर उसको लगता है कि मेरी रिसर्च में क्रिकेट को लोग ज़्यादा देख रहे हैं तो क्रिकेट के ऊपर थ्रस्ट जाएगा। अगर उसको लगता है हॉकी के लिए है, या अगर हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, या क्योंकि हम ओलंपिक्स की बात जब करते हैं, क्योंकि मीडिया में जो चीज़ आती है लोग ज़्यादा उसमें उस टाइम डिस्कस करते हैं, वो जब ओलंपिक्स पास आ जाती है। विजय जी, आपने कहा कि मूवीज़ के बारे में हम बात नहीं करते, मैं मूवीज़ और मीडिया को थोड़ा कंबाइन करके कहूँगा। अगर आपको याद होगा जब प्यासा मूवी बनी तो साहिर जी उसके राइटर थे और एस टी बर्मन उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उसके बाद उन दोनों ने दोबारा काम नहीं किया, बिकॉज साहिर ने कहा कि मुझे इतने ही पैसे मिलने चाहिए जितने म्यूज़िक डायरेक्टर को मिलते हैं, और उसके बाद उन्होंने कभी पैसे कम नहीं लिए। सिमिलर थिंग हुई जब सलीम जावेद जी ने राइटिंग करना शुरू किया। तब तक राइटर्स बड़े अच्छे थे, बट नोबडी डिमांडेड एनी बिग मनी। और जब ये जंजीर मूवी बनी थी तो सलीम जावेद ने बॉम्बे के सभी पोस्टर्स पे लिखवा दिया था कि रिटन बाय सलीम जावेद। सो उसके बाद हर कोई मूवी जो आई उसमें सलीम जावेद का नाम जरूर आता था। दीज वर चेंजिंग मूवमेंट्स इन द इंडस्ट्री। तो मुझे आपसे ये जानना है कि ये मीडिया में क्यों नहीं हुआ, कि जो हमारे राइटर्स हैं, जो वाई हैव नॉट दे बिकम लार्जर देन व्हाट दे आर टुडे, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो रोल है, वो इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? बिकॉज आई फील लॉट ऑफ मीडिया पीपल फील ए लिटिल डिसइल्यूजन्ड टुडे। तो वो उस जितना रोल वो प्ले करते हैं उतना उनका प्रोजेक्ट क्यों नहीं होता? कि अगर स्पॉन्सर्स प्लेयर्स को पैसे दे रहे हैं, स्पॉन्सर बाकी जो स्पोर्टिंग टीम को पैसा दे रहे हैं, तो मीडिया इतना प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ जो एक्चुअली प्लेयर्स को बना सकते हैं, जो एक्चुअली गेम को बढ़ा सकते हैं? You're talking about individual reporters? Yes. Individual reporters or media as a sports industry, as a sports contributor. We all work for a salary. And that's what I'm saying. Why it has not changed? It will not change. Supposing Vijay Lokapally's column should be a sponsored column, paid as much as a top cricketer or a top hockey player. Why not? I don't know. Rajaram, will the editor allow that? Rajaram is, I hope, is not sleeping. No, because I cannot. There have been sponsored columns in rest of the world which were paid. Even Vengsarkar's column was paid. Achha, tell me So something. why not a good media write-up being sponsored by, say, Yeah. Mumbai Indians It's- or by anything? It's very good. I don't know how many of you know that all these 90% of these columns
are written by journalists. Yeah, I know. Ghost writer, that's okay. So we are behind those columns. We get paid by. Why not on the forefront? No, it will not happen because our job is essentially to go and watch and report. We cannot be bigger than the game. Cannot definitely be bigger than the player because I am there because of the player, right? If you see, for a journalist, for me, my USP would be: can I get a Sachin Tendulkar, Virat Kohli interview? Which I can. Let's look at it. Tony Cozier became as big a character in his time as the rest of the cricketers. Harsha Bhogle today is recognized as importantly as any other commentator. So it is not impossibility for media to try to expect, imagine, and then work towards that their contribution is recognized. Sir, जो दिखता है वो बिकता है, right? और हम दिखते नहीं हैं, तो हम बिकेंगे नहीं. We'll always be behind the screen, and so it is. I take pride in the fact that if I give a missed call to Tendulkar, he'll return my call. So for me, that is a bigger achievement than what my editor gives me as paisa. I get my salary, I work for my salary, I'm very honest, and it will never happen, because if that happens, then it will not be, you will see biased writing, you will see ego clashes. If I'm going to a player, I know he is a player. I cannot think like him, I cannot speak like him, because my perspective is as a journalist sitting outside. जब मैं अंदर जाऊंगा तो game becomes very different. I'll quickly give you one example. I saw once, I thought umpire ने call off कर दिया game, and I thought light was so good. This was at Eden Gardens, and I checked. I called. I know the umpire. I asked him कि आपने कैसे call off कर दिया? Light तो इतना अच्छा है. So he took me to the center pitch, राजाराम Eden Gardens. जब pitch पे पहुंचा तो अंधेरा है, because light was getting lost. So अगर bowling होती, I couldn't have seen the ball, right? And also, like लोग बोलते हैं कि गोल छोड़ दिया. आप हॉकी गोल पोस्ट के पीछे खड़े होइए, आपको बॉल दिखेगा नहीं. So it is then you realize that there is a difference between a journalist who may have watched 50 years of any sport, but there is a player who may have played only 2 seasons at the top. So he will always remain supreme, and I am there only I am glorified when he is glorified. And if he speaks to me, I am more glorified. Rajaramji, I would like to ask you here, do you feel that a time will come when journalists will become as, maybe significant, I won't say as big as the players, but they would become important players in this large game of any game, sports? Not going to happen now. I think VIJAY LOKAPALLY's generation was lucky. They got to know him. I'm lucky. Some people know me as well. But this is not how it's going to pan out, because we were the bridge between the athlete and the fan. Today the athlete can reach out, she can sit here and put out a tweet, and she will have 1,000 people liking it immediately. Sports people don't need journalists anymore. A little story from 2007 ICC, please sit down sir, don't stand. From the ICC World 2020, Mahendra Singh Dhoni was captain, and Rohit Sharma, who's captain today, had just come into the Indian team. He was man of the match in a game, and he came to a press conference. Soon after the press conference, typically the Hindi television journalists, and Vijay will bear me out, they always say Hindi mein boliye, because the international press conference is always in English, unless the player can't speak English at all. So the TV channels always would go and say Hindi mein boliye. That day, Mahendra Singh Dhoni told the Hindi reporter that आज के बाद रोहित शर्मा को मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीडिया को रोहित शर्मा की जरूरत पड़ेगी. 2007, I'm talking 16 years, nearly 16 years ago. Today, and that time social media was still new. We were still evolving. Today,
we've seen it in our political system. We are seeing it in society that you don't need the media to reach out to fans. They have got their own method. Social media has empowered them all to reach out to fans and to tell their stories. So I don't see a time in the future where a journalist is going to be really bigger than either the sport or his institution. I will back what Vijay just said. No newspaper will allow a journalist to become bigger. अगर बड़ा बनना है तो अपनी दुकान खोलिए, यही बोलेंगे. People will have to do that sooner than later. बाली सर, प्रभजोत जी, आपका क्या विचार है कि अगर आपने sufficient number of books लिखी हैं और उस फील्ड पे, उस गेम में आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया है, तो क्या आपका कंट्रीब्यूशन उतना ही रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए? आई वोंट से एज बिग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, बट आपका भी कंट्रीब्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जितना कि बाकी लोगों का होता है. देखिए, आई थिंक दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू. There are different ways of looking at things. Always two ways of looking at things. You see, one problem with social media is, and will remain, is credibility. Anybody can put anything up. But if you are belonging to conventional media, you are acting with a lot of responsibility. And what you say, that's why we say the printed word is very sacred word. What you say, and if I say, this is the spelling of playwright, you say, no, this is not the spelling, it may be W-R-I-G-H-T. I say, no, I'll show you dictionary. You say, yes, that's okay, because it's printed. So that credibility will always remain with media. It will never go to social media. So people will take that, कि यार ये responsible media है, ये Tribune में छपा है, ये हिंदू में छपा है, ये बिल्कुल ठीक है. Because I know when I was in the Tribune, there used to be a lot of rumors. Tomorrow is a छुट्टी. Government has declared. Tribune में छप गया. That is the credibility. Which social, it will never come to social media. Because a lot of people will say, tomorrow छुट्टी हो गया, हो गया, हो गया. But moment you see, that difference has to be there. We have so many laws governing media, even today. Social media doesn't have any. Maybe at times it's the whims and fancies of the government. Say, no, we ban Instagram, we ban Facebook, we lock social media in, say this is a trouble zone area, there's violence. But print media or conventional media, maybe even government-owned Doordarshan or All India Radio, they still, or BBC or Voice of America, still they enjoy that credibility, which will not come to social media. So media will always play a role, and it will remain fourth estate. It will remain watchdog. It will not become lapdog as social media can be at times. Very right. I think Mr. Vivek is waving that we should end this wonderful conversation. Just one last question before we go. If Kamal, आप एक बार बताइए कि आपका best picture और आपने कैसे लिया? It's very difficult, you know. नहीं to चुनो, judge एक चुनो. one particular picture, but you're talking about sports photograph or in कोई general? भी, any picture. In general, I would say, well, very difficult. But what we had seen in the screen, one was of Modi ji holding a lotus flower, and recently I took a picture of a sunbird, you know, which is very close to a flower. So those two pictures I rate among the best. वैसे तो I have done Kargil war also, a lot of memories from that also, but I don't have rights to show those pictures to you because I was with Reuters and everything has gone with them in their archive. Even if I need for my personal, I can't. So there are many. It's very difficult to, select one or two, but these are the two recent I really like them. And Vivek, with your permission, just 30 seconds. This was during very difficult days of... you don't need my permission, no, sir, please. Of travel. This is about, I'm talking about credibility and recognition. So I and a friend of mine from Times of India, we were coming from Patiala to Chandigarh after a Duleep Trophy match. हर रोज आते थे जाते थे. तो रात का टाइम हो गया, पुलिस ने रोक लिया हमको. तो I said क्या है? So I said मैं हिंदू से हूँ. कहता वो क्या होता है?
सो जो मेरे साथ में रविकांत सिंह था वो बोला मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ, कहता वो क्या होता है। सो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बोला ट्रिब्यून से है, तो उन्होंने कहा चलो। एंड बाली सर, आई जस्ट ऐड वन थिंग कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो कंट्रीब्यूटर हो सकता है किसी को इंस्पायर करने में, बट वो खुद उसकी राइटिंग या उसका आर्टिकल इंस्पायर कर रहा है, बट जो उसके पीछे स्टोरी है वो किसी और की है, क्योंकि वी आर एट टाइम्स वर्किंग एज अ मैसेंजर। और ये उसी तरीके से है कि जो हेल्थ जर्नलिस्ट है, अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट का कोई इंटरव्यू कर रहा है या उसके बारे में लिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सैलरी जो कार्डियोलॉजिस्ट को मिलती है वो ही उसको मिले। और कई बार हम जब सर बात करते हैं तेंदुलकर की कि क्रिकेट जो उसे कवर कर रहा है उस प्लेयर को उतना जर्नलिस्ट को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, कई बार सर हम ऐसा प्लेयर को भी हम कवर करते हैं, शायद उसके पूरे घर में 5 या 6 हज़ार रुपये महीने के पहुंचते हैं। उस टाइम हमारी सैलरी और जो हमें प्रिविलेज मिल रही होती है बीइंग अ पार्ट ऑफ जर्नलिस्ट वो बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो इट डिपेंड्स, इट्स अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कब हम किस चीज़ को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट एक चीज़ है कि हम सारे वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी वांट टू कंट्रीब्यूट कि स्पोर्ट्स जो है ग्रो करे और स्पोर्ट्स पर्सन को उसका ड्यू मिले। Thank you very much. I enjoyed it extensively. Thank you. Thank you, speakers. I'm sure everybody enjoyed it. I would like to invite Mr. Prabjot Singh, Mr. Charanjit Singh, and Mr. Hardeep Chandpuri to present mementos to our speakers. मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो आप लोग पहले you are a guest here in our city. I think before they all just come down, I need a big applause for Dr. Bali. I think the best moderator ever for the day. Really, it was amazing, sir. Thank you so much.